Good morning, dear students. Welcome all of you in my Prerana YT classes. Today in this class, I am going to discuss about human rights perspective that comes under the DSC paper 2 under 5th semester system. In this class, I will provide you some of the expected questions for exam as far as the first chapter is concerned. So first chapter, that is, here we will discuss about what is human rights, the division of human rights into 3 important generations, and thereafter we will focus here about UDHR and its different articles where it focuses upon the protection, promotion of human rights all over the world. So hope you understand. If there will be any kind of problem, please share with me. So shall we start? The first question in this class today, what is human right? What is ह्यूमन राइट? मानव अधिकार जिसको हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स, इसका मतलब क्या है? ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम दैट बिलोंग टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड फ्रॉम बर्थ अंटिल डेथ. ह्यूमन राइट्स आर द स्टैंडर्ड्स दैट अलाउ ऑल पीपल टू लिव विद डिग्निटी, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस. ह्यूमन राइट्स जो है हर के लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से हम लोग को ह्यूमन डिग्निटी मिलता है, फ्रीडम मिलता है, इक्वलिटी एंड जस्टिस को हम लोग प्राप्त करते हैं. हर एक के लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन राइट्स. तो ह्यूमन राइट्स का डिवीज़न किसने किए थे? हु मेड द डिवीज़न ऑफ ह्यूमन राइट्स इनटू 3 generations and in which year? This is jurist Karel Vasak at the International Institution of Human Rights in Strasbourge in the year November 1977. तो इसको याद रखना, कारेल भासक स्ट्रासबर्ग में नवंबर 1977 में 3 generations ऑफ ह्यूमन राइट्स को डिवाइड किए थे. सो व्हाट आर द 3 generations ऑफ ह्यूमन राइट्स? कारेल भासक फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को वो डिवाइड किए थे ऑन द बेसिस ऑफ ब्लू राइट, रेड राइट्स एंड ग्रीन राइट्स. इसको याद रखना, फर्स्ट जनरेशन को ब्लू राइट कहा जाता है, सेकेंड को रेड एंड थर्ड जनरेशन को ग्रीन राइट कहा जाता है. तो इसको याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट? First generation of human rights are called as blue rights, and they are what kind of nature? They are civil and political in nature. And what there we find, what kind of rights we will find there? Right to life, equality before law, freedom of religion, property rights, voting right, etc. But they serve negatively to protect the individual from the excesses of the state. So इसको याद रखना, नेगेटिवली प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल्स को स्टेट की एक्सेसिव फंक्शन से. नेक्स्ट, व्हाट इज सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है रिलेट करता है इक्वलिटी को, और इसका जो आरंभ हुआ था और रिकॉग्निशन हुआ था पर्टिकुलरली आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड. और देयर वी फाइंड सोशल राइट्स, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स, बट दे आर कॉल्ड एज रेड राइट बिकॉज गवर्नमेंट के ऊपर ये इम्पोजिशन आता है द ड्यूटी टू रिस्पेक्ट, प्रमोट एंड फुलफिल देम. ह्यूमन राइट्स के कैसे प्रोटेक्शन होगा, इसके लिए गवर्नमेंट के ऊपर इम्पोजिशन डालने की वजह से रेड राइट कहा जाता है. नेक्स्ट, थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जिसको हम ग्रीन राइट कहते हैं, और इसका जो फोकसिंग है कम्युनिटी और पीपल और द कलेक्टिव कंसेप्ट को ये फोकस करता है, जहां हम लिबर्टी एंड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इन पॉलिटिकल लाइफ को पाते हैं, और यहाँ हम पाते हैं राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू पीस, राइट टू हैव हेल्दी एनवायरनमेंट. तो एक कलेक्टिव कंसेप्ट को फोकस करता है स्टूडेंट. तो थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को हम ग्रीन राइट्स कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज UDHR? UDHR और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है बहुत ही हिस्टोरिक डेवलपमेंट हुआ था, जिसका एडॉप्शन हुआ था यूएन जनरल असेंबली में एट इट्स थर्ड सेशन ऑन 10 दिसंबर 1948 को. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका कंट्रीब्यूशंस, और वर्ल्ड में ऑल ओवर द वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन, प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Then what is the purpose of Universal Declaration of Human Rights? UDHR is the first international agreement on the basic principle of human rights, and its main important purpose is to provide a foundation for the protection of human rights all over the world. Human rights की protection के लिए बहुत ही important foundation है, जहाँ हम पाते हैं freedom, justice and peace
how it will be established throughout the world, इसका main important purpose है. Next, where was the UDHR was created? The declaration was proclaimed by UN General Assembly in Paris on 10 December 1948 by 217 resolution. 217 रेजोल्यूशन 1948 में डिक्लेरेशन को अडॉप्टेड किया गया था यूएन जनरल असेंबली के 3rd सेशन में. तो इसको भी याद रखना, पेरिस में. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन यूडीएचआर एंड व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हियर. तो यूडीएचआर के अंदर 30 आर्टिकल्स है ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन डेवलपमेंट के लिए. But here we will discuss about some of the most important articles in UDHR. That is Article 1st, right to equality. Article 2, freedom from discrimination. Article 3, right to life, liberty, personal security. Article 4, freedom from slavery. Article 5, freedom from torture. And Article 6, right to recognition as a person. How many states have signed the UDHR? Today now there are 192 member states of the UN have signed UDHR. United Nations organizations के जो 192 member states हैं UDHR और Universal Declaration of Human Rights को वो sign कर चुके हैं, because the most important objective and purpose of UDHR is to protect, promote and to provide a good foundation for the development of human rights throughout the world. How to save life, how to provide a good and healthy environment. That is the most important purpose of this. Through this, we will able to create a very better world for the whole mankind. So this is the video that is providing you before all of you, and hope you understand. And if there will be any kind of doubt about anything, please share with me. So see you in next class.